the thing is that organizations, even in Pakistan and worldwide, are experiencing this transformation in which there is so much data that's being generated, right? And sort of businesses want to operate in a fashion that they want to make every little decision based off of data. And so that is essentially what we were taught in the MBA as well. And I particularly remember that I was very interested in this one course that was taught to us was about business intelligence, basically BI, right? uh, and so yeah, I sort of developed this love for data during my MBA, and I realized that essentially, like, there's so much data that's being generated digitally, and how software can essentially, or software engineering, or like the programming elements of it can greatly sort of benefit in improving this analysis, making it more robust, helping in making better decisions. And so that's essentially where I developed this love for data, essentially, right? And so 1 year into my MBA, I was blessed with, I had this opportunity to join a startup, right? And it was one of Pakistan's regional homegrown startups by the name of Retailo, right? And so essentially they were just starting off. They had done a fresh round of funding, right? And so they were looking to sort of start their data department, right? And I remember I was onboarded as a BI analyst, right? And I was like the first essentially person in that data team. And so from there, it was a journey of constant learning, relearning, growing, and setting up that data platform. Had its own challenges, right? And I would say that it was a journey of intense learning, basically, right? Because I had to very quickly. It's a startup environment. You're expected to quickly learn. There's no, there's not a lot of oversight on you, but there's also no sort of limit on how quickly you can learn things and grow in that sort of environment. And so, and my and my role of data and my knowledge of data engineering sort of grew very naturally, because I was expected to not only perform analysis, I was expected to perform it in a way which was repeatable, robust, delivered results consistently. And so, in that way, and so that is how I learned a whole lot of practices and tools, that can be applied in any organizational context to make sure that data driven decision making is actually being done and is being followed. And there's a consistent definition of what we mean by data, right, throughout the organization. So what is revenue, what is growth, what is high performance, what is low performance, right? And so that is what essentially the essence of data engineering is. And so yeah, essentially I worked and so this start I started with this I started working at Retailo, the startup, in 2020, in summer of 2020. I did that. I graduated in 2021, continued on with Retailo for another year until summer of 2022. By that time, my skills had grown exponentially, and I had learned so much. And so essentially, by that time, I had so many skills on my CV that I would just get flagged on LinkedIn by recruiters based on the skills that I had mentioned on my profile. And I would literally not write anything else. I would just write my skills. And yeah, you can't really lie about your skills, because whoever is gonna hire you for your skills is definitely going to be knowledgeable on those. And so yeah, essentially I just gathered a whole lot of skills, and those enough on my LinkedIn were enough. So LinkedIn as a platform is powerful enough that I essentially got headhunted, or people, a recruiter based out of Spain reached out to me just based off of looking at my profile. And that in itself is like an example of the dearth of this kind of technical talent that is present in the market right now. And yeah, my the recruiter, my profile got flagged. They set up a round of interviews for me, and from there onwards, it was smooth sailing. We had three interviews, four interviews in a span of 3 weeks. And at the end of the fourth round, they were like, we're happy to relocate you to London, basically, where the rest of the team sits. And yeah, it's been 1 year that I've now been in London, and it's going great so far. That's so interesting, Omar, and that's great to hear. I think
You talked about skills and origin companies का भी आपने बात की. They're doing really well in Pakistan right now, and where you're working, that's also amazing. I think just now आपने बात की कि skills की. So people do learn skills, but we really need to actively learn skills, do all sorts of things, and then perhaps, land where we wanted to. So for a common man, there are a lot of definitions of data engineering right out there, and once you Google it or you go resources, so you get pretty confused. So the main purpose of having this webinar actually is to educate people and to break it down to them and provide them sort of roadmap. What are the things that they can do? What are the things that they can, focus on? So please, for a common man, just explain what exactly is data engineering if you were to explain it to someone who's considering a career. जी, बिल्कुल. So basically, like in an organizational context, right? So everything, even in Pakistan and all across the world, all companies are trying to record their operations using software, right? any sort of operation, आप स्टोर पे जाके चीज खरीदें, आप आईडी कार्ड बनवाने जाएं, कुछ भी करें, ये सारी चीजें जो हैं ये एक बेसिकली जो है ना डिजिटाइज्ड हो रही हैं, जिनमें ये जो इवेंट्स हैं ये एज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं डेटाबेसेस में, राइट? कि ये चीज खरीदी गई, ये चीज बिकी, ये वो एटसेट्रा, राइट? सो what has happened essentially in behind the scenes in technical terms is that this data has grown immensely, right? And so now there's a lot more data in databases, right? And there's all kinds of growth of data everywhere, right? And so specifically data engineering is that, it is sort of, bridges the gap between the business domain and the technical domain, right? So for example, we know that we want to, let's say, price our our products more effectively, or we want our most loyal customers to spend more, right? So this is like a business domain that we want to link with with data, right? So basically I'm so sorry, Omar. yeah. Isha, can you please mute people? Yeah, thank you. Yes, please. Yeah, Carry on. no worries. So essentially, the job of a data engineer is to design data pipelines, or design software processes. I mean, data pipeline is essentially a software or a program in itself, which essentially streamlines the data just for a particular decision, right? So for marketing decisions, I want a data set daily which tells me my top performers. And so in my current database system, I have all my customers, and out of that, I want to curate a list of top performers. Now, that is a concept of a data pipeline. And how would that play out in like real terms? Okay, there would be a database which has all of your orders, all of your customers, right? All of their record transactions. And on top of that, you build a program that fetches these, high value customers in a programmatic fashion without you having to do anything. And that program does its job consistently. If there's any anomaly, it is able to deal with it, and it is able to consistently produce that business outcome for me. That essentially is a data pipeline. And so the main sort of crux of data engineering, or what, so essentially it is data analysis, but it is in a in a engineered fashion. It has to be it has to be resilient. It has to follow the industry best practices. So software engineering in general has been out there for a long time, right? And so the industry has evolved with a lot of best practices which are there for a reason. They make your programs more resilient, more they make the outcomes of your programs more impactful. And so data engineering is essentially creating data pipelines with those software engineering best practices in mind. And those engineering best practices are a ton of small skills. I wouldn't say that you have to be like master in any one skill, let's say just Python or just SQL, but you have to know enough Python, enough SQL, enough Linux based scripting to sort of utilize a lot of these tools that other people have built. And then that just makes your analysis more robust, more efficient. And um and so that is the main sort of job of a data engineer, to design data pipelines, to maintain data warehouses, right? So um
At the end of the day, it is also in some organizations the job of a data engineer to make sure that there is a central database that is being used for analytics. और उसको बस मेंटेन करना भी डेटा इंजीनियर का काम है कि उसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो टाइमली आता रहे। अगर कोई उसमें डेटा का इनफ्लो रुक गया है किसी भी वजह से, कहीं रेप्लिकेशन टूट गई है, कहीं अ, कोई मतलब आपका कोई सॉफ्टवेयर चोक हो गया जो वो इंजेक्शन से डील कर रहा है, इंजेक्शन की लॉजिक क्या है कि और मतलब एंड एज विद एवरीथिंग सॉफ्टवेयर ये डेटा पाइपलाइन डिजाइन में देयर आर अ टन ऑफ ट्रेड ऑफ्स। यू कैन हैव अ फुली मैनेज्ड सर्विस जिसके आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, या आप एक अपना खुद पाइथन का कोड लिख लें जो मुफ्त होगा लेकिन उसको होस्ट मेंटेन करने के पैसे आपको देने पड़ेंगे। राइट। सो ये एक स्पेक्ट्रम होता है पूरा, और उस पे हर तरह के यूजर के लिए हर तरह की चीज है। बट एट द एंड ऑफ द डे कोर यही है कि हमने डिसीजन मेकिंग के लिए, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए जो है डेटा प्रिपेयर करके रखना है बिजनेस स्टेक होल्डर्स के लिए। और उसको जितना हम एक अच्छे रिलायबल तरीके से करते रहेंगे, जो जो भी करके, राइट। तो वो ये एक बेसिकली एसेंशियली दीज आर लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा इंजीनियर। All right, thank you so much. I think this explains really well कि exactly data engineering होता क्या है, उसमें करना क्या होता है. Obviously, technical terms आपको उसके ऊपर with the passage of time you can have a stronger grasp on it. But it is important to know what are the foundations of it, what are the fundamental principles that you really need to keep in mind. Building on to that, जिस तरह भी आपने बहुत एक डिटेल हमें पिक्चर दिया है what exactly is this, आप थोड़ा सा ओवर view भी दें about the sub branches of it, like what are the sub branches that this field has, और इसके अंदर आप क्या scope देखते हैं since you've worked nationally and internationally both. So how do you see this field more evolving? How do you see the scope of it? Or what are the jobs that we're going to see internationally and nationally in the days to come? So Ikra, somebody's posted a question. So are we taking questions later on, or how are we going about that? Completely up to you. If you want to take it before that, you can I, take it. I, oh, sure. I can quickly answer this question by Jawad. So Jawad, basically, अगर आप data analysis से शुरू हैं तो आप most probably अभी या शायद एक्सेल स्टेज पे होंगे या एसक्यूएल पाइथन स्टेज पे होंगे, बट इफ यू वांट टू एसेंशियली मूव टुवर्ड्स डेटा साइंस, राइट, तो यू हैव टू my people tend to spend a lot of time, there's multiple ways of going about it. You can either improve your mathematical base, which is essentially which is the pillar or foundation of data science, right, and sort of go towards that role, towards that. But even if you have like a strong mathematical foundational base, right, to understand how these latest models are working, right, you'll find that in a lot of organizations they expect you to know a lot of data engineering technologies just to be able to do data science jobs, because they expect you to be well-rounded engineering professionals. उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, और मतलब पाइथन एसक्यूएल नोटबुक में लिखना आनी चाहिए, बट उसके अलावा आपको फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का जहां सॉफ्टवेयर चलेगा, राइट, आपके लोकल कंप्यूटर पे तो नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर, तो आपको वो सीखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना सॉफ्टवेयर कैसे रन करती हैं, क्लाउड कैसे यूटिलाइज करती हैं, राइट, और मतलब और उसमें कंटेनराइजेशन क्या है, डॉकर क्या है, क्यूबरनेटीज क्या है, क्योंकि बड़ी ये वो टर्म्स हैं जो एग्जैक्टली फॉरन आना शुरू हो जाती हैं जैसे ही आप एक थोड़ी सी mature organization में काम करना चाहेंगे. And so from my experience, what I've seen is that data science professionals in mature organizations in London specifically, because मेरा यहाँ का भी experience हो गया अब, are well-rounded engineering professionals that know a lot of different software engineering technologies, and they're able to tie them together to तो उसके अंदर डेट मॉडल्स, उनको मॉडल्स भी बनाने आते हैं, उनको वो मॉडल्स डिप्लॉय भी करने आते हैं, उनको उन मॉडल्स से इन्फरेंस एंड पॉइंट्स भी सेटअप करने आते हैं, और उन मॉडल्स को दोबारा रीट्रेन करने के लिए जो स्केड्यूल्ड वर्कफ्लोज हैं वो भी उनके कोड भी वो लिख रहे होते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं, तो काफी सारी चीजें बेसिकली, राइट. I hope that answers your question, Jawad. So, Ikram, moving on to what you were saying about the sub branches within data engineering, right? So, data engineering, again, with any field, there is a spectrum of skills that you can learn, ठीक है? और उसमें depending on के what level of proficiency you are at, आप उस तरह से ही जो है ना आप मतलब you keep on, so it's a continuous learning process as with everything. But if I were to sort of break it down into sub branches, I would say that there are data engineers who work primarily with Python or SQL, right? And so there
sort of position would be more towards the data analysis side, where they are mostly dealing with, just like the analysis part of things, where data को वो transform कर रहे हैं, उसको structure कर रहे हैं in a way जिससे business impact can be derived, or decisions which can lead to decisions, or even dashboards, right? Or like effective dashboards, basically, right? uh, so that would be like the sort of first level. And then there is another subset, or which is at a bit more advanced level. And so by no means are these like segregations कि आपको एक में ही fit होना है. You can learn all of these as well. But the next sort of subset is data systems or platform engineers, right? So this analysis, again, as I was saying, in an organizational context, runs on infrastructure, or runs on platforms जो कि एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में uh, जो है वो prevalent है, basically, right? So what I'm talking about specifically is AWS or GCP, right? So a lot of companies, their operational databases live on AWS, right? So essentially now their data platform is also going to be on AWS. So you need to know a host of AWS services just to create that platform जिसके ऊपर फिर analytics होगी, right? So first, and so essentially for this role you would need to know quite a bit about cloud, about Linux based OS, and how to operate in that environment, right? And so that would be, and then essentially all of those things, because in that case you would be using the AWS platform extensively, which in itself is like a sea of technologies, which is like, I mean, it would take a lot of time to even master, like, one technology out of the 200 plus that they're offering, right? So then so essentially the second subset deals with learning that group of technologies, right? Data systems or platform engineers. And then the third case, or maybe I would even say like the most highly paid out of this subset would be the big data engineers, right? Who are dealing with petabytes of data, or terabytes or petabytes of data, and or are dealing with real time use cases, right? Okay, so as soon as an event is generated, so for example, if we go to LinkedIn, right, और हम LinkedIn पे एक चीज सर्च करते हैं, हमें ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली या थोड़ी देर बाद LinkedIn उससे रेलिवेंट नोटिफिकेशंस भेजना शुरू कर देता है, right? And that is not just with LinkedIn, it's with every other company now. Okay, if you're looking at something, आपने कोई product search किया जाके, like, so for example, यहाँ अगर let's say I search a product on like something like दराज, तो थोड़ी देर बाद दराज मेरे अकाउंट से एसोसिएटेड ईमेल पे ईमेल आ जाएगी कि यार आपने ये प्रोडक्ट सर्च की थी, तो आप ये खरीद लें अगर आपने नहीं खरीदी, राइट? तो ये this sort of event driven architecture is based on like a real time system, जिसमें as soon as you've done something on their website, they're gonna send you some sort of push notification or something along the lines based off of that. So this would be a more streaming or real time use case. And इस इसके अंदर, इस subset के अंदर, the technologies that are being used are mostly Java based, Scala based, right? उनका learning curve भी ज़्यादा है. But again, the people using these technologies are highly paid, even in Pakistan as well, and in the Western world as well. They are one of some of the most highly paid professionals who are utilizing these technologies. So I would say that these are basically sort of the sub branches within data engineering. um, yeah, so Irfan and has got a question about where we can learn data engineering, and what should be the entry point. Yeah, so I think these questions are mostly similar. I would say that one of the things that I do is, it's most easiest to, if you have no experience with programming, so then I would say कि, as I was recently listening to a podcast by Usman Asif, who's like the owner of DevZing, who said कि CS, अगर आपके बिल्कुल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप तो पहले फिर CS50 से जरा प्रोग्रामिंग तो सीखें, कि मतलब, और उस पे जरा थोड़ा सा जो है ना टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा अपना दिमाग इस पे जो है ना लगाएं कि कैसे पाइथन लिखनी है लैपटॉप पे. यूट्यूब पे रिसोर्सेज भरी हुई हैं कि कैसे शुरू करना है, और क्या मतलब कैसे सेटअप करना है. कोई भी मसला है गूगल करें. एसेंशली इन दिस मॉडर्न डे एंड एज एवरीबडी इज अ ग्लोरिफाइड गूगलर, राइट? तो कीप गूगलिंग योर वे आउट ऑफ थिंग्स, बेसिकली. तो वो तो हो गया अगर आपका बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है. अगर आपका बैकग्राउंड है, तो फिर आप
यूट्यूब पे स्पेसिफिकली राइट, और मीडियम पे और इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके देखें कि इंट्रोडक्टरी डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और वो कैसे किए जा सकते हैं, राइट। और जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आई एम ग्लैड कि मैंने एटम कैंप के भी जो कंटेंट देखा है, राइट, इट इज कंप्लीटली रेलेवेंट विद व्हाट द मार्केट इज डूइंग एंड व्हाट द मार्केट नीड्स। तो आप उन चीजों को फॉलो करें and just keep learning. I mean, it's the sheer number of technologies that you need to know to be like a successful data professional is quite high. But if you start from somewhere, right, and you start taking interest in it, then essentially you're gonna keep learning, and there will be a point it will be impossible to deny the amount of sort of skills that you've gathered, basically, right? एक्चुअली इस तरह की हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिलते हैं and, हमने उनको ही कीपिंग ऑल ऑफ दोज इन माइंड ऑफ मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट सो ताकि आपका भी ऑब्वियसली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट That's fine. तो वी वांटेड ताकि वो सब आंसर हो जाएं और पीपल जो भी लोगों की कंफ्यूजन होती हैं वो सारी कवर हो जाएं और जिस तरह भी आपने आई थिंक बहुत डिटेल में बताया कि सब ब्रांचेस क्या होती हैं और आपने ये भी बताया कि आपको रिक्रूटर्स ने लिंक्डइन के ऊपर यू नो बिकॉज यू यूज्ड टू टॉक अबाउट योर स्किल्स अ लॉट दे रीच्ड आउट टू यू खुद से और फिर आप माशाल्लाह से आप इधर जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी थोड़ा क्योंकि आई थिंक हमने आपने जैसे बताया यूट्यूब पे रिसोर्सेज तो मिल जाते हैं गूगल भी कर सकते हैं लेकिन बहुत कम यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट ऑफ इंटरैक्ट विद पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री and who have all sorts of relevant experience. So what is your day-to-day tasks are at your job and how's your job look like for you? And what are the things that you do for people who are trying to see कि हम अगर data engineer बनना चाहते हैं तो हमारे क्या tasks होंगे and then perhaps they can prepare accordingly. Exactly. Yeah. So day-to-day tasks of a data engineer are very similar to those of like a general software engineer or like a full stack developer or even a DevOps engineer. Because again, see, data engineering in itself is a highly technical field, and it is a sub branch of data engineering of software engineering. And so essentially your day-to-day responsibilities and the tasks you perform are going to be according to that tune as well, right? So most days my the things that I have to do are we are constantly, so I as a data engineer at Bally's हमने एक अपना डेटा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो कि हमारी जहां जहां मार्केट्स में ग्लोबली प्रोडक्ट्स हैं उनको उधर जो हमारे इंटरनल कस्टमर्स हैं या जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं उनकी डिसीजंस को इन्फॉर्म कर सके, राइट। सो एक सेंट्रल हमने डेटा प्लेटफॉर्म एडब्ल्यूएस पे बनाया हुआ है जो हमारी यूएस की डिप्लॉयमेंट्स, हमारी ईयू की डिप्लॉयमेंट्स, हमारी एशिया पैसिफिक की डिप्लॉयमेंट्स, उनको जो है ना उनसे रिलेटेड जो डेटा है उसका उसका प्लेटफॉर्म है, राइट। सो उसके ऊपर हमारा so my main responsibility is to make sure that we are constantly developing new pipelines. So we are undergoing a massive transformation from a legacy system to the cloud, right? So we have to develop features of that platform. Yani essentially we have to develop data pipelines on that platform. About data pipelines are a big mix of Python, SQL, and cloud infrastructure जिसमें AWS Airflow हम use कर रहे हैं, हम Databricks use कर रहे हैं. These are again, I can go into a lot of detail about how we are using them, but like again, keeping it non-technical. So pipeline development हो गई, new pipeline development हो गया काम. उसके बाद जो हमने ऑलरेडी 100+ या 200+ पाइपलाइंस डेवलप की हुई हैं उनको मेंटेन करना, उनके स्टेटस देखना, अगर उनमें से कोई फेल हो रही हैं तो उनको as critical, depending on the critical on the nature or like the sensitivity of that information or of that pipeline, हमने उसको फॉरन ट्रीट करना होता है. सो पाइपलाइन मेंटेनेंस हो गई. उसके अलावा जो हम नए फीचर्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं उनके लिए नई पाइपलाइंस डेवलप कर ली, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ठीक है. A lot of time is actually spent in sprint ceremonies या collaboration के. So for example, we want to achieve something 3 months down the line. हम चाहते हैं कि हमारी पाइपलाइन में हमारे जितने भी ये लेगेसी प्रोसेसेस हैं ये माइग्रेट हो जाएं विद इन 6 months. तो उनके लिए प्लानिंग अहेड, कोलैबोरेशन और मीटिंग्स वगैरह, that is like roughly one hour, half an hour, 1 hour daily startup. So sorry, daily stand up etc. So that would be sprint ceremonies, right? उसके अलावा constantly एक mature organization वही होती है जहां डेटा और सारे जो assets हैं वो मतलब of course version control में हो, git में हो. तो हाँ हमने and our projects are well documented, तो documentation पे बहुत time spend होता है because we are a team of 80+ data engineers spread out across the world in Ballys Interactive. So we have to make sure कि documentation वगैरह updated हो. And
और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है ना कोड रिव्यू करना पड़ रहा होता है बाकी टीम मेंबर्स का, कि अगर किसी और ने कोई भी कोई चीज डेवलप की है तो एक डेमोक्रेटिक सा प्रोसेस है जिसके अंदर सारे इंजीनियर जो है वो बैठ के एक दूसरे का कोड रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि यार इसमें ये गलती है या यहाँ इस तरह बेहतर हो सकता है एटसेट्रा, विच इज ऑल्सो ह्यूज पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? तो और ऑफ कोर्स अगर इसके अलावा कोई थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो वी ट्राई टू स्पेंड दैट ऑन लर्निंग एंड ग्रोथ एक्टिविटीज। सो वेरी रिसेंटली हमारी कंपनी ने दे enrolled us in, so I took part in a 3 day course. I mean, it's not enough to learn that technology because it's a big technology, but it was a 3 day course for Kubernetes application development. So there is opportunities for learning and growth, and you have to consistently be doing that because it is an ever evolving field, and you have to keep learning every day. Not every day, but essentially, you get the gist of what I'm saying. You have to keep learning and keep growing in that sense. So essentially, these are like the day-to-day responsibilities that I do. थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप करते हैं, और इंटरेस्टिंगली आई ऑल्सो फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि जब भी हम किसी भी समवन हु इज वर्किंग इंटरनेशनली नेशनली इन दिस फील्ड्स, they always say that they're also constantly learning, and they themselves are constantly growing, taking courses, online resources, whatever is available, so they take some part of their day and do that. So building on to that, so we'll keep it non-technical, but thoda sa just to give our audience a gist of it, और थोड़ी understanding के लिए हम टूल्स और लैंग्वेजेस की भी बात करेंगे जो आपने शुरू में, लाइक व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि आप स्विच करना चाह रहे थे एंड यू वांटेड टू टैप इनटू दिस फील्ड। तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बूट कैंप्स होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेनली क्या वो इस तरह की टूल्स और लैंग्वेजेस है जो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे कोई स्टार्ट कर सकता है सीख के, एंड देन दे कैन परहैप्स डाइव इनटू दिस फील्ड एंड लर्न मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स लेटर। Yeah. So इसमें basically talking about like the tools and programming languages, right? So so the program essentially there's like a different groups of tools हैं जो आप सीख सकते हैं. Sorry, excuse me. So programming languages में basically आपको starting out आप Python सीखना शुरू करें because that's gonna be like your bread and butter. एक्चुअली इवन बिफोर दैट, बिफोर इवन पाइथन, आप सबसे पहले एसक्यूएल सीखना शुरू करें, प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन एसक्यूएल प्रैक्टिस करने की काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं, राइट? सो ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसक्यूएल एंड ट्राई टू रियली मास्टर दैट बिकॉज दैट्स गोना बी अ फाउंडेशनल स्किल जो ना सिर्फ आप एक दफा सीख लेंगे लेकिन आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा जो है ना टेस्ट भी होगा। नो मैटर आप लाइक जितनी बड़ी डेटा की जॉब करने जा रहे हो पाकिस्तान में, यूके में, अमेरिका में, आपको एसक्यूएल आपकी टेस्ट होगी, राइट? फिर आप थोड़ी स्टार्ट देन स्लोली स्टार्ट वर्किंग योर वे अप टुवर्ड्स मोर डिफिकल्ट थिंग्स। सो एसक्यूएल सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाइथन सीखें, राइट? फिर उसके बाद फिर आप ये भी एक बहुत ज्यादा चीज जिसको मैं एम्फसाइज करता हूँ और मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है कि आप लिनक्स ओएस को समझें कि कैसे उसमें ऑपरेट करना है, बिकॉज a lot of the other sort of technologies that you need to learn to become like a highly paid data professional stem off of your knowledge of of Linux scripting, जिससे बेसिकली आपको पता लगे कि कैसे लिनक्स के ओएस में ऑपरेट करना है, कैसे कमांड लाइन इंटरफेसेस यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, राइट? सो दैट वुड बी लाइक सॉर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एस्पेक्ट ऑफ इट। उसके अलावा फिर डेटा स्टोरेज वेयर हाउसिंग के बहुत सारी टूल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करें या आपकी कंपनी ने बेसिकली कौन सा क्लाउड चूज किया हुआ है। आपको या AWS या गूगल क्लाउड या एज्योर से रिलेटेड जो डेटा से रिलेटेड सर्विसेज है पता होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे क्लाउड भी किसी और का कंप्यूटर ही है, इट्स नॉट कि वो क्लाउड है एक्चुअल। तो और वो जो जो कंप्यूटर है वो एसेंशियली एक लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट के थ्रू ही आप उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो और इवन बिटवीन द क्लाउड वेंडर्स कोई डिफरेंस नहीं है, AWS GCP Azure की सेम ही सर्विसेज हैं। और जो लेट्स से इन द डेटा कॉन्टेक्स्ट, तो हर कंपनी हर इन सर्विस का एक रेडीमेड डेटा वेयर हाउसिंग का टूल है, जैसा AWS का जो है रेड शिफ्ट है। एंड अगर आपने उसमें डेटा ETL वगैरह जॉब सेट करने के लिए AWS ग्लू है। तो बट लाइक अगेन इन AWS इस सारे को अचीव करने के लिए there's tens of different ways, and but the principles are the same कि आपको AWS
के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए, राइट। फिर डेटाबेसेस का आइडिया होना चाहिए। एसक्यूएल डेटाबेसेस और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में डिफरेंस इतना ही है कि उनका सिंटैक्स क्या है। कॉन्सेप्ट्स भी फर्क हैं, बट फ्रॉम लाइक अ डेटा इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव आप यू कैन वेरी क्विकली पिकअप के डेटा रिट्रीव कैसे करना है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस, सो यू हैव टू नो a bit about the internals of relational versus non-relational databases, right? So MySQL पे काम किया हो, लेट्स से नो एसक्यूएल में किसी डीबी पे काम किया हो, बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। वी लर्न थिंग्स एज वी गो ऑन, राइट। सो ये डेटाबेसेस का नॉलेज हो गया। फिर आपको एक टूल आना चाहिए जो डेटा पाइपलाइंस वगैरह को ऑर्केस्ट्रेट करे। और ये एडवांस नॉलेज थोड़ा सा हो जाएगा जिसमें आपको लेट्स से एयर फ्लो यूज करना आता हो, जिसपे जो है ना जॉब्स एज डैग्स हम स्केड्यूल करते हैं, etc. But again, this is something that is a bit more advanced. I mean, if you've gotten to the point of learning airflow, then you can consider yourself a skilled data engineer, right? Um, गिट आना बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा की जॉब करना चाहते हैं तो आप अभी से गिट को आजमा लें, अपना लें अपनी जिंदगी में। सीखना मुश्किल है। अभी मुझे भी, मैंने इतने साल हो गए, मुझे खुद भी लगता है कि मुझे सही से नहीं आता, लेकिन जो है मतलब जस्ट कीप लर्निंग इट, और जैसे जैसे मसले मसाइल आते रहें आप उनको सॉल्व करते रहें। बट गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज everything has to be centrally stored in a repo, in like in an organizational context. So again, all of these are skills that you want to apply in an organization. And so finally also, before like another section is कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सो डॉकर पता होना बहुत जरूरी है। अब वो अगेन, अगर आपको लिनक्स ओएस का ही नहीं पता तो फिर आप डॉकर की ब्यूटी को ना समझ सकते हैं, ना उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो और डॉकर के बगैर तो आप किसी कंपनी में डेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे विदाउट डॉकर, राइट। या आपको पता लगेगा कि आपने एनालिसिस किया, लेकिन जो बंदा उसको एक्चुअली डिप्लॉय कर रहा है वो डॉकर यूज कर रहा है, या जो उसको एक्चुअली में ऑपरेट कर रहा है, राइट। सो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें एट एट द एंड ऑफ द डे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस इज ओपन सोर्स। आप अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें इनमें से AWS के फ्री क्रेडिट्स हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीजें एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। लेकिन जिस 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 सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेशन में मैंने बताया, उसमें आप करेंगे तो आप ओपन सोर्स भी अपने लैपटॉप पे सब डिप्लॉय करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप किसी को भी इंटरव्यू में जाके कहें कि यार ये देखें मेरे पास ये स्किल्स हैं, राइट। और लेकिन on a side note, I also want to say कि पाकिस्तान में a lot of people, there are a lot of companies जो कि who are doing highly interesting data engineering work, and they are at a very mature sort of, they are a very mature organizations जो analytics के जो है ना यूज केसेस पे काम कर रही है, नॉट जस्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट बट ऑल्सो उनके पास बाहर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको जिनको एज वो कॉन्ट्रैक्ट डेटा इंजीनियर सप्लाई कर रहे हैं, राइट, पाकिस्तान से। सो अगर आप if you are able to land a position even as a junior data engineer in one of these companies, you will very quickly be able to learn on their budgets, right? आप AWS पे खुद कितना ही बजट स्पेंड कर लेंगे, लेकिन अगर आप एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं लोकल जिसने AWS लगाया हुआ है, वो आपको विद इन 1 ईयर AWS के, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स दे हैव द बजट एंड द स्केल or the problem to solve at that level, right? So you can very quickly, learn at that stage, learn in such a company. So even if you're working for, let's say, 1 year, 1.5 year, 2 years, you can very quickly pick up a lot of skills that will be actually be transferable to, other organizations throughout the world. और अगर मतलब इट वुड बी बेस्ट अगर आपको इधर इस तरह की किसी कंपनी में कोई मेंटोर भी मिल जाए जो आपको एक्सटेंसिवली ट्रेन कर सके। एंड ऑनेस्टली आई वाज लकी कि मुझे एक ऐसा मेंटोर मिल गया जिसने मुझे बहुत क्विकली बहुत सारी चीजें सिखा दी। तो या ऑल्सो आई मीन, सो बट माई पॉइंट इज कि जो लोकल कंपनीज और जो डेटा इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही हैं, दोज आर वेरी lucrative opportunities जो आके which can unlock a lot of doors in the future. एग्जैक्टली और जिस तरह हमने मेंटोरशिप की बात की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूथ टू हैव सच पीपल। आप यू आर वन ऑफ दोस पीपल नाउ योरसेल्फ, जो कि सिखा सकते हैं, बता सकते हैं एक स्मॉल इजी रोड मैप ब्रेक डाउन सबको, हमारी ऑडियंस को भी, और लोग हु आर ट्राइंग टू टैप इनटू दिस करियर उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने अभी बात की है कि पाइथन की, एसक्यूएल की, और एक और क्वेश्चन भी मैं देख रही थी कि आर और टैबलू के बारे में भी पूछ रहे थे। तो बिल्डिंग ऑन टू दैट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस
that how does this role differ from uh, data analyst and data scientist? Yeah. So basically, yeah, again, data में you're gonna find कि data engineer, data scientist और data analyst ये तीनों roles होंगे किसी बड़ी कंपनी में. अगर आप किसी थोड़ी सी relatively छोटी कंपनी में हैं, तो हो सकता है कि आपको ये तीनों hats पहननी पड़ रही हो, right? So you be the engineer, scientist, and analyst, all three on, let's say, a project, and then it's on you कि how you sort of grow that project, right? But speaking about a bit more mature organizations जहाँ ये तीनों roles होते हैं, so data analyst essentially का काम होता है कि उसने डेटा सेट एक प्रिपेयर कर दिया गया है उसके लिए, उसके ऊपर उसने उसका एनालिसिस करना है, यानी उसको डेटा एक्सप्लोर करना है, रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है और एक्चुअली इनसाइट्स जनरेट करनी है, राइट? सो फॉर एग्जांपल ऑन अ डे टू डे बेसिस somebody has to make sure कि revenue targets are being met, right? Customer engagement targets are being met, or somebody has to take ownership of those reports, right? So that would, let's say, be the task of a data analyst. A data engineer would be a bit upstream to the data analyst and saying कि यार, if there is any, like, whatever data this and the analysts are generating reports on, is that data even reliable, is it even trustworthy, right? So a data engineer would essentially be setting up the ETL pipelines and focusing on the infrastructure and the pipelines and the reliability aspect of that data, right? एंड डेटा साइंटिस्ट जो है फिर वो एक बिल्कुल ही सेपरेट सॉर्ट ऑफ रोल है जिसके अंदर यू आर डूइंग डेटा एनालिसिस, बट योर डेटा एनालिसिस इज मोर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आप essentially you're using even like different sort of techniques like machine learning techniques, and to sort of generate more to sort of cater to more specific use cases, right? So data science, so essentially data scientist का काम है data modeling का, but it is more mathematically driven, more model driven, right? And so they would mostly be so the techniques that the data scientists are going to use will be definitely more advanced than the ones that the data analyst would be using, right? And they could be using, or I mean, they don't even have to create their own models. They could be using already trained models, but even using those models is in itself, is a big task, and so data scientists would only be sort of doing that. So these are how these three fields are essentially, tied together. All right, thank you so much. Also, अभी जिस तरह आपने इन तीनों रोल्स को डिफरेंटली डिफाइन कर लिया और डेटा इंजीनियरिंग की अभी हम मेनली बात ही कर रहे हैं, तो आप क्योंकि नेशनली काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी, नेशनली आपने किया है और आप अभी इंटरनेशनली कर रहे हैं, तो आप क्या स्कोप देखते हैं और आप कितनी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? आपको लगता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर पीपल इन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो इन टर्म्स ऑफ दैट आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आप क्या देखते हैं कि कितनी ज्यादा और डिमांड होएगी और कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉर द यूथ एंड पीपल हु आर लर्निंग फॉर इट, तो प्लीज शेड सम लाइट ऑन जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अ डेटा इंजीनियर राइट नाउ, बिकॉज द डिमांड बोथ locally and internationally is really high, right? And so any sort of data professional, be it from anywhere in the world, who has put in the time, has learned the hard technologies, right? And has and can prove demonstratively that he will be successful in operating in an environment where they are being used, right? उसके लिए तो globally बहुत बड़ी job market है, right? So even as I speak right now, my organization is looking to hire data engineers, for a location in Europe, right? So there's a country in Europe, Malta, जिसके अंदर even our company is looking to hire, and honestly they don't really care कि if a person is based in Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, America, Brazil, they if you get flagged for an interview, you do good in an interview, you're good to go, right? Of course, communication really matters a lot as well, right? But you don't have to be perfect in English. आपकी इंग्लिश इतनी को बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आप एक कन्वर्सेशन होल्ड कर सकें और अपना पॉइंट समझा सकें, बिकॉज अगेन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट आपको डेली डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंट आप स्टेजेस पे होगे प्रोजेक्ट्स पे, जो आपने बस
मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है, और यही काम होता है एक प्रोफेशनल का, राइट? सो जॉब मार्केट तो ह्यूज है। इवन मतलब फेसबुक एटसेट्रा से लेके छोटी से छोटी कंपनी, विद दिस एक्सप्लोजन ऑफ डेटा, एज आई वाज सेइंग, एट 5-10 years from now, every company is going to be a software company, right? Because कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, और उनको एसेंशियली जो वो डेटा निकल रहा होगा उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए जो सिर्फ उसको क्यूरेट करेंगे। तो ग्रोथ की या अपॉर्चुनिटीज की तो बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, राइट? और ये not सिर्फ this, not just this, these are amongst the most highest paid professionals all throughout the world. So especially in the States and even in the UK, you can expect salaries that, compare with like other top tier professionals as doctors, lawyers, or highly paid accountants even से भी ज्यादा होती हैं times. uh, and also that a lot of these companies are also offering relocation assistance. So the other day I saw a job opening for a data engineer, and to be honest, it's unlikely that people from or even myself, or or people from Pakistan are able to work on all the cutting edge technologies, because there's like a lot of budget constraints and everything. But the upside is so much that there was a data engineering job that if it's in the US, it's gonna say 3-4 years of experience. Don't care who you are, where you are, and we'll pay you, let's say 300K, 400K, जो कि US के हिसाब से भी is a lot of money, right? So salaries are, you can expect like really high salaries, relocation opportunities, and even even if you just want to work from Pakistan, so people are willing to do that as well. Like remote work is also an option. Although I think post COVID, a lot of companies are sort of moving towards hybrid models, so they want people on ground. But yeah, so future growth बहुत ज़्यादा है, and so that's like the primary motivation, my motivation as well. And yeah, so I would say that should be या everybody's motivation. आई थिंक, और हम ये बहुत एक ट्रेंड देख भी रहे हैं that there are a lot of people who are getting hired by these international companies, और there's a lot of this overflow, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी companies internationally are looking actually at Pakistani talent. तो it's great news for everyone, और जिस तरह आपने explain भी किया है कि बहुत सारी opportunities हैं. The key is to please learn and to start from somewhere. बहुत सारे online resources available होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मेंटोर की जिस तरह बात की, एटम कैम्प ट्राइज इट्स बेस्ट. हम उमर की तरह के और भी बहुत से लोगों के साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करने की कोशिश करते हैं. हम ऑडियंस को और यूथ को एक चांस देते हैं कि वो आप इस तरह की क्वेश्चंस कर सके, और हम उनसे बिफोर हैंड क्वेश्चन इसीलिए ले लेते हैं बिकॉज 1 घंटे का टाइम इज नॉट इनफ टू आस्क ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, आपके जितने भी बजिंग प्रेसिंग क्वेश्चंस होंगे. तो जिस अभी आई थिंक मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख रही हूँ, हम लास्ट 5 मिनट्स में वो वाले क्वेश्चन भी ले लेंगे. बट बिफोर दैट, जो क्वेश्चंस मैंने सबके दिमाग में रख के प्लान किए हुए थे, तो मेंटोर की बात हुई थी. लोग सब अभी पूछ रहे थे कि मेंटोर हम कैसे ढूंढें, और मेंटोर्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आप एज अ पर्सन हु हैज लाइक नाउ अ सफिशिएंट एक्सपीरियंस माशाल्लाह, तो आप बताएं कि क्या टिप्स एज अ पर्सन हु स्टार्टेड, जो who Umar who started from the very beginning and the Umar that you are right now, और आप इतना एक सक्सेसफुल माशाल्लाह करियर में हैं, तो आप क्या टिप्स देते हैं एज अ मेंटोर जो लोग, और उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि मेंटोर्स को किस तरह रीच आउट करें, क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकते हैं इफ दे आर लुकिंग एट अ सक्सेसफुल करियर इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड? राइट, तो देखें इसमें मेंटरशिप की तो जो वैल्यू है उसको तो अंडरस्टेट किया ही नहीं जा सकता. आपने अगर इफ यू लकी इनफ टू जॉइन अ कंपनी जिधर आप यू फील कि यार ओके दिस इज माय सीनियर एंड ही रियली नोज स्टफ, राइट? तो आप उस चीज को ट्रीट दैट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एंड try to gain as much knowledge as you can. Put your ego aside, right? Because a lot of times, even during my career, I used to feel very uncomfortable when the pace, I felt that the pace of learning was too much, and you're out of your element a bit. आप थोड़ा सा imposter भी feel करना शुरू कर देते हो. But like those are the environments that you are growing in and that you are most going to grow in and thrive in, right? Because so mentor आप ऐसा ढूंढें जो आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करे, जो आपको कॉन्स्टेंटली जो है ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाए, राइट? एंड सो इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप which is beneficial for both people. Also, but at the end of the day, I would also like to say that the idea of a mentor is to give you high level guidance, right? And the day to day
how you sort of go about learning and tackling problems that your mentor won't help you solve. The whole idea of mentorship is to have general high level guidance from on bigger topics, right? Okay, so for example, you could ask your mentor about, okay, this is the kind of challenge that I'm facing, like, or this is the trajectory that I want to take. What is your take on this, right? But you can't ask for like a specific also, for example, मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ और मेरे से नहीं हो रही, तो मैं गिव अप कर दूं या मैं क्या किस तरह सोर्स सॉल्व करूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं, वो नहीं। सो हाई लेवल गाइडेंस के लिए आप मेंटोर्स के पास जाएं, एंड या आप द आइडिया इज के ask just high level questions, right? Okay, so for example, this is where I'm at in my career, like what direction should I take? So that direction, eventually it is a journey of 1,000 miles, and so the your mentor can only show you the first few steps of that journey, right? But that 1,000 mile journey, everybody has to take on their own, right? So find mentors that can constantly course correct you, not like give you like micro details, but yeah, like just like constantly course correct you, right? And I can't understate the importance of a good mentor. अपनी अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई ऐसी जॉब की तरफ जा रहे हैं, या कोई भी और ऐसा बंदा जिससे आप समझते हैं कि जो एक टेक्निकल परस्पेक्टिव से, बिकॉज सी अगेन गोइंग बैक टू द फैक्ट कि डेटा इंजीनियरिंग अगेन एक टेक्निकल फील्ड है, तो अगर आप किसी को टेक्निकली रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उससे सीखें, और उसको जो है ना उससे जितना सीख सकते हैं सीखें बेसिकली। एक्चुअली दिस ब्रिंग्स बैक टू मी टू माय लास्ट क्वेश्चन, और वो यही है कि आपने भी जिस तरह बात की थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ अदर पीपल्स टाइम एज वेल, और आपने लैंग्वेज की बात की थी कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप समहाउ कम्युनिकेट कर सके, यू कैन गेट योर पॉइंट अक्रॉस, इतनी कम्युनिकेशन आनी चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स की तो नो डाउट इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बट हाउ इम्पोर्टेंट आर सॉफ्ट skills like communication, in terms of reaching out to someone? I mean, what's the least can happen? Well, they are going to say no, and then you're going to find another person because there are a lot of people out there. But what is that, line जो आपको cross नहीं करनी चाहिए? आप अगर कोई questions पूछ रहे हैं, किसी mentor को reach out कर रहे हैं, किसी recruiter को reach out कर रहे हैं, तो वो क्या ऐसी थोड़ी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए in terms when you're reaching out to someone? तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। जी, इस पे बिल्कुल जो है ना, मैं एक इस पे मतलब टिप तो प्रो टिप तो नहीं है, बड़ी बड़ी कॉमन नॉलेज वाली बात है। लेकिन आप अब अगर आपने किसी को कोई ईमेल करनी है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आप एक एक पोजीशन ऑफ ह्यूमिलिटी से जो है ना अगले को मुंतखब करें। आप किसी के पास भी जाते हैं, आप असल जिंदगी में भी, तो आप एक उसके पास अगर आपको उससे कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ पूछने जा रहे हैं, तो एक एक जरा पोजीशन ऑफ ह्यूमिलिटी से जाएं, ताकि अगला भी उस चीज को अप्रिशिएट करे। तो ऑफ कोर्स वो तो एक होगी कि आपने किस तरह किसी से कम्युनिकेशन करनी है, लिंक्डइन पे भी बेशक, राइट? तो आपने किसी से अगर कुछ पूछना है तो आप फौरन आप सवाल पूछ लेंगे, तो अगला आपको शायद उतना अच्छा जवाब नहीं देगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक थोड़ी सी बेहतर सी तमहीद साथ बांधे कि यार मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह जो है वो करना चाह रहा हूँ, ये वो, तो आप मेरा ये एक स्पेसिफिक सवाल है, थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस, राइट? अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछना है, आप उस पर जरा डिलिबरेट करें कि मैं अगले से कैसे इसका अच्छे से अच्छा जवाब ले सकता हूँ, राइट? जहां तक कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स की बात हुई, डेटा इंजीनियरिंग के लिए कम्युनिकेशन की पावर को तो अंडरस्टेट किया ही नहीं जा सकता, राइट? एक एवरेज इंजीनियर, एवरेज डेटा इंजीनियर या कुछ भी, वो भी एक बहुत अच्छा जो है ना अपने लिए नाम क्या बना, एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसकी हाउ क्लियर ही इज इन हिज कम्युनिकेशन, राइट? वो कितना अपने पीयर्स से अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, कितना अपफ्रंट एक्सपेक्टेशंस को अलाइन कर सकते हैं, राइट? कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि यार इसके ये डिले होने वाला है, राइट? या इसमें कोई कोई किसी किस्म का रोड ब्लॉक आने लगा है, राइट? तो लाइक आप कितना ऑनेस्टली, कितना क्लियरली उसको कम्युनिकेट कर देते हो डे वन, उस उतना उतना जो है ना आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होगे। सो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, अटेंशन टू डिटेल ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टाइम मैनेजमेंट तो अगेन कैनॉट अंडरस्टेट कि टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क। अब तो लाइक एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ना हम हर तरह के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में जब था तो आई वाज वर्किंग विद माय ब्राजीलियन टीममेट्स, राइट? टीममेट्स आउट ऑफ अमेरिका। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो आई एम वर्किंग विद पीपल ऑफ ऑल डिफरेंट नेशनैलिटीज। सो अगर आपके कोई बायसेस हैं, अगर आपके कोई
किसी किस्म के इस तरह के आइडियाज हैं तो वो काम के अंदर आपके बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। और जैसे जैसे दुनिया मोर ग्लोबल हो रही है तो वो टीम वर्क में ये चीजों का कल्चरल सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड हियर कि जब से कि इवन वंस आई केम हियर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद white people, Indian people, Sri Lankan, all of that, all different nationalities, right? So everybody is extremely careful about the cultural sensitivities of other people, right? कोई किसी के किसी किस्म के आइडिया का या प्री कंसीव नोशन का मजाक नहीं उड़ाता। सो दैट टीम वर्क एलिमेंट और बीइंग सेंसिटिव, एम्पथी कहते हैं इसे बेसिकली, कि आप विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग आप फील कर लें कि यार अगला इसको क्या रिएक्शन होगा मेरे इस किस्म की बात पे। तो टीम वर्क के लिए वो एम्पथी होना बहुत जरूरी है, तो उस पर काम करें, राइट? एंड खैर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज इज कम्युनिकेशन। एंड सो इसमें प्रो टिप ये है कि जी आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी फ्री है सबके लिए। आपने किसी को ईमेल भेजनी है, किसी को कोई बात करनी है, आप एक दफा चैट जीपीटी एक टैब खोली रखें और उसके अंदर आप अपना प्रॉम्प्ट से अपनी इंग्लिश एक दफा सही मतलब सही कर लें उसकी। दैट बिकॉज सी इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हमें उसको मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करने के लिए जरूरी है कि हम अपना क्लियरली पॉइंट आर्टिकुलेट करें। ये जैसे लाइक आई सेड जितना क्लियरली कर लेंगे उतने उसके नंबर हैं। तो चैट जीपीटी को अपने वर्क फ्लो में इस तरह से इनकॉर्पोरेट करें कि कोई आपने कम्युनिकेशन करनी है प्रोफेशनल, तो आप एक दफा चैट जीपीटी से उसको वेट कर लें, ठीक है? तो या दैट वुड बी sort of the soft skills I think would be good थैंक यू for सो data मच engineering. उमर। आई थिंक 1 घंटे में हम इतनी सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ लॉट जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बस एक आपको थोड़ा सा रोड मैप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप किधर से स्टार्ट करें, क्या स्किल्स हैं जो सीखिए, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स, उनके ऊपर आप किस तरह काम करें, आप मेंटोर्स को किस तरह रीच आउट करें। प्लीज नेवर फील एंटाइटल्ड टू समवन्स टाइम, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे उमर से भी हमने सिर्फ 1 घंटे का ही रिक्वेस्ट किया था, तो हम वी कैन नॉट कीप हिम मोर देन दैट, बिकॉज दैट हमने कमिटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जिससे जो कमिटमेंट किया है, तो प्लीज आप एटम कैम्प के प्लेटफॉर्म पे आए, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, प्लीज सीखे, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाएं, यूट्यूब, whatever is accessible, whatever is available, just learn. एंड प्लीज आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल हैं तो आपको उनसे फायदा उठाना चाहिए। यू शुड लर्न, यू शुड एक्सपैंड योर होराइजन, इंक्रीज योर इनकम, जो जो चीजें आपकी गोल्स हैं। सो वी रियली होप कि वो आप लोग मीट कर सके। थैंक यू उमर, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड नाइस स्टार्टिंग विद यू। we're so happy कि आपने हमें अपना टाइम दिया, और it was really interesting, बहुत सारी चीजें आपने सिखाई हैं। So thank you so much, and we wish you all the best. I hope you become more successful and keep on growing, coming back to us, और भी जितने पाकिस्तान में लोग इस तरह की प्लेटफॉर्म्स हैं उनके उस पे वो लोग बात कर सके। और कोई क्वेश्चन अगर आपकी रह गए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। विल ट्राई टू गेट देम आंसर्ड एज वेल, हमारे सोशल्स पे लिख सकते हैं। एंड थैंक यू उमर, आई हैव अ ग्रेट वीकेंड। Thank you, Ikra. It was really been an honor to be here. And yeah, you guys are doing great work. So, guys, yeah, I think my LinkedIn vagara and everything is on the communication. So, if you have anything else, you can reach out to me there, and whatever capacity I Please can do help that. and who much I can sort of help, I'll try my best. Right. You're being So, very humble, actually. You're doing amazing work. I think I strongly encourage everyone to please have a look at his profile and see the amazing work that he's doing. Thank you so much. I thank you for giving your time on a weekend. Allah Hafiz. Thank Allah you, Hafiz. everyone, Thank for you. Bye. joining. Have a great weekend. Bye bye. Allah Hafiz. Thank you so much, everyone, for joining. Please, you can keep an eye out my socials पे जाएं। हम इस webinar को भी actually बहुत जल्दी YouTube पे upload कर देंगे। तो in case anybody missed something, कुछ important questions अगर आपके रह गए हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो you can definitely go back to that and refer to that. Thank you so much. Allah Hafiz. Have a nice week.